Hello all, welcome to my channel. You are watching Engineering Graphics lectures. This lecture is on isometric projections. In this video, I have explained how to draw isometric projections. This is the question. I will discuss the solution and then I will also show you the solution so that you can do it quickly. This is front view and top view. So if I draw three-dimensional view, then it will be like this. This is O. Front view measures 50. Entire thing is on the right hand side, so R is equal to 100 and L is equal to 60. So we'll construct a box of this dimension. Then this is O, and we'll start doing this. We'll draw a rib of dimension 10 mm. Then there is a rectangular portion between the two ribs. The rib which is behind, which cannot be seen, completely shown by two inclined lines. Then at the front, we have L shape. Then we have a semicircle at the bottom. Towards the left of O, we have flat surface. What you are left with is only this thing, and we have a slot here. Okay, and there is a line which will go from here. Now, for your reference, I am writing the dimensions here. This total is 100. So from here we have center line. You don't have to write dimensions. I am writing the dimension just for you to understand. Okay, what is the length of each and every part. You can now see the dimension of each and every line, so it will be easy for you to construct it now. हेलो सर। यस सर वो पीछे राइट साइड का स्लॉट बनाने में प्रॉब्लम आ रहा है। ये राइट का ये वाला, हाँ ये पहले यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लो पूरा, ये 60 का ये पूरा लाइन ड्रॉ कर लो। उसके बाद में 20 20 20 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो ये पॉइंट मिल जाएगा और ये पॉइंट मिल जाएगा। करेक्ट, जो मैंने अभी सर्कल किया है 2 पॉइंट्स मिल जाएगा। फिर यहाँ से इसका विड्थ कितना दिया है 30, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, इसको पैरेलल, ठीक है। यहाँ से कितना 30, तो 30 शायद ऐसे भी आ सकता है। फिर यहाँ से लाइन, यहाँ से 30 अंदर भी जा सकता है और यहाँ से भी 30 लाइन, फिर इसको ज्वाइन कर दो। ये अंदर जो पोर्शन आएगा इसको इरेज कर देना है।
हाँ सर, वो सर्कल अंदर घुस जा रहा है पूरा। हाँ, अंदर जाएगा वो, क्योंकि वो इंक्लाइन किया है ना, तो शायद अंदर जा सकता है, तो उसको इरेज कर देना है बाद में। So students, in next, I repeat, you do not have to give these dimensions. I have given dimensions just for your understanding, just for your reference. You don't give dimensions. And don't forget these lines. Which one? See this, I am marking star over here. This line. Okay, generally students forget this line where I have marked star. And there is one more line here. This one. Because this is the extra construction that we have to do. इलिप्स के लिए जो रोम्बस बना है, रोम्बस कैसे ड्रॉ करना है? प्लेन को पैरेलल चाहिए लाइंस रोम्बस का। यहाँ पे जो रोम्बस बना है, ये लाइंस कैसे चाहिए? दिस शुड बी पैरेलल। ये रोम्बस ऐसे बनेगा। पैरेलल टू दिस लाइन, है ना? ये ऐसे प्लेन पे बन रहा है ना? Hope this is clear to you, students. Now we will move on to the next problem. In this problem, what is the dimensions on three sides? So if you find height of the object is 20 plus 15 plus 10. So the height of the object is 45. What is the dimension to the right hand side? The dimension to the right hand side is 120, and to the left hand side it is 60. Now let us draw the box to include the problem in the isometric box. So at the extreme right we have a pillar which we are drawing like this. It is not touching the base, it is 10 mm above the base. We are leaving some gap and drawing it towards till the point O. Then the two pillars on the right hand side can be drawn like this. The dimensions is 15 by 15. Then on the left hand side of the object, this line can be drawn. Now this height is given as 35 mm from the base. The top view is showing rectangle, which we can complete like this. Now since the two pillars on the right hand side are not complete, so we'll make construction to show two pillars. Like this. Next, we will find the center and draw center line. Then we have to draw two holes. So these two holes are seen as isometric circles. We have to follow the procedure of drawing rhombus and then construct the ellipse. Now I am giving dimensions just for your understanding. You do not have to give dimensions to the isometric view. These dimensions will help us to understand how the view is drawn.
तो सी हियर, या राइट हैंड साइड व्यू है ना, सो यहाँ से देखेंगे, जब यहाँ से देखेंगे तो ये एक पिलर है, ये एक पिलर है, ये दो पिलर के बीच में से जितना स्पेस है 30 mm उतना ही ये वाला दिखेगा लाइन, ये वाला। देखो क्वेश्चन में देखो, ये पिलर है, ये पिलर है, इस पिलर के बीच में यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस लाइन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे डॉटेड हाँ है सर सर। और यहाँ पे डॉटेड है। ठीक है, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड समझ। व्यू रहता था तो, लेफ्ट हैंड साइड रहता था तो ये पूरा लाइन कंटिन्यूस दिखता था, और फिर ये डॉटेड आ जाता था पिलर। ठीक है, हाँ लेकिन बनाते सर तो ऐसा ही थे ना, लेकिन फिर। हाँ ऐसे ही बनेगा ना आइसोमेट्रिक। ये यहाँ से हम फ्रंट व्यू देखेंगे, करेक्ट, फ्रंट व्यू। हाँ सर। देखो अभी मैच करो, फ्रंट व्यू तुम्हारा ऐसे दिख रहा है क्या, हाँ। टॉप व्यू ऐसे दिख रहा है क्या, या राइट साइड व्यू कहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है। ठीक है, यहाँ से जब हाँ। देखेंगे तो वही मैंने एक्सप्लेन किया, और वो राइट साइड व्यू इधर आएगा, लेफ्ट साइड में, करेक्ट। ओके सर, ओके ओके, क्लियर हो गया सर, थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।